Wait a minute. 2 digit divided by 1 digit division. Okay, what does division mean? Division means repeated subtraction, and multiplication means repeated addition. So we are only going to do repeated subtraction here, which is division. Now here we will take 2 digits that will be divided by 1 digit and the answer. So for the answer, first we need to see in how many digits our answer will come. Okay, for that, to figure out in how many digits our answer will come, I'll take a reference question. That will be 72 divided by 2. Easy question. Now how will I check कि मेरा कितनी digits में आंसर आएगा? मैं सबसे पहले चेक करना था कि हमारा कितने digits में आंसर आएगा जब भी हम फिजिकली अबैकस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. जब हम फिजिकली अबैकस पे परफॉर्म कर रहे होते हैं. Why? Because we sometimes get the rod placings wrong कि जब हमारा वंस पे जाना होता है हम हाँ टेंस पे कर देते हैं और जब हमारा टेंस पे जाना होता है तो हम हंड्रेड्स पे कर देते हैं. So this is a very common mistake in abacus. But when you do it visually or mentally, you don't really need to see in how many digits your answer will come, because when you write it, it goes with the flow and you don't really need to. But you should know ki how to figure out that in how many digits your answer will come. So how to figure out that? See, in the first digit that we hear, it is 72 and here it is 2. Okay, tell me which is the divisor and dividend. The dividend is 2 and divisor 72. Divisor 72. Okay, wait a minute. Just a minute, Rushika, okay? Correct. This is the dividend here. And this is the divisor here, okay? So this is the dividend. I'm just writing, I'll erase it later. Now, how will we find out how many digits our answer will come? So see, what is the first digit of the dividend here? Dividend, you know, right? 72 is the dividend. Now, what is the first digit of the dividend? That is 7. 7. Ma'am, done. Very good, Shri. Now what you do is you do the exercise 1 to 100, okay? And tell me how many times you did it, okay? At least 15 times you have to do. Yes, ma'am. So yes, so the first digit here is 7 and in the divisor it is 2. So is 7 bigger than 2 or smaller than 2? 7 is bigger than 2. Very good. Bigger. So when the first digit of the dividend is greater or larger than the divisor, then our answer comes in how many digits? 2 digits. Okay. अगर हम सेम मेथड 3 डिजिट में अप्लाई करते हैं लाइक 729 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आंसर हमारा 3 डिजिट में आ जाएगा, है ना? The number of digit keeps increasing. But why 3 digit? No, I'm just telling you for reference, okay? 3 डिजिट में इसलिए आएगा क्योंकि जब हम 3 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, when we take any question of 3 digits, what we see, रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट. यहाँ पे हम तो 2 डिजिट या 1 डिजिट ले रहे हैं ना, ये और है, ठीक है? डिवाइड नहीं है, और है. ओके, दैट इज द डिफरेंस. ओके,
So whenever the first digit of our dividend is bigger or greater or larger than the digit in the divisor, then our answer comes in 2 digit. But when the digit in the dividend, the first digit of the dividend is smaller, okay, this it is smaller than the digit in the divisor, our answer comes as 2 digit. But when we take a number in which the dividend's first digit is smaller, when our first digit of the dividend ये पूरा है ठीक है, when the first digit of our dividend is equal to the digit in the divisor, our answer comes in, wait, right here, our answer comes in 2 digit. तो हम इसका क्या कंक्लूजन बना सकते हैं कि जब भी हमारे डिविडेंड पे जब हमारी डिजिट डिविडेंड व्हेन इट इज बिगर फर्स्ट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड is bigger than the divisor or it is equal to, see, or it is equal to, our answer comes in 2 digit. But when it is smaller, ठीक है, when it is smaller, our answer comes in 1 digit. Okay. Why I'm telling you this, because when you will do it on Abacus, na, it will become easier for you, but when you do it visually, you don't really need to do this. So this is just a step for you. Okay. Now we'll solve the questions. How to solve the questions. Here, what is the real work? Here is the real work done. So for reference, I'm taking 72 divided by 2 is equals to, पहली डिजिट 2 से बड़ी है तो हम क्या लेंगे, 2 डिजिट में आंसर रहेगा, 2 डिजिट मैंने यहाँ पे लिख दी. ये हम अभी कंप्लीट डिवीजन कर रहे हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा इसके अंदर. ओके, सो नाउ हाउ वी डू इट. पहली डिजिट 7 है, हमने 7 को 2 से डिवाइड करा. क्या 7 2 की टेबल में आता है? नो, इट डजंट कम ऑन 2 टेबल. बट अ नंबर स्मॉलर देन दैट, 6 आता है. यस, 6 कम्स ऑन व्हाट नंबर? 3. विल राइट 3. ठीक है. बट इफ यू सी, हमने 7 पूरा डिवाइड नहीं करा ना, हमने तो सिर्फ 6 डिवाइड करा है उसका. तो अगर हम इसे माइनस कर दे, 7 - 6 इज 1. 1 हम यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो जो 2 था वो 12 बन गया. सो 12 क्या 2 के टेबल में आता है? यस, आता है. 36 पे आता है, तो हमारे क्या आंसर आ गया? 36. अंडरस्टूड? Yes. I'll explain once again. Okay. Okay. So the digit we have taken is 7 here. 7 does not come on 2's table. So we'll take a number smaller than that. 6. 6 comes on 2's table. So we have written 3 here because it comes on 3. Then we have subtracted it. Wait a minute. Then we have subtracted 6 by 6 from 7. That comes 1. We will take it as a carry here. Wait a minute. Yes, as a carry here, we have taken it. So it becomes 12 instead of 2. Not 12 divided by 2 is equals to 6. So we have written 6 here. Okay? I didn't understand. देखो हमने क्या करा है यहाँ पे. पहले हमने फर्स्ट डिजिट ली डिविडेंड की, हमने उसे 2 से डिवाइड करा जो हमारा डिवाइजर है. हमारा कितना आंसर आया? 3 आया, क्योंकि 7 नहीं आता, 6 आता है 2 की टेबल में. तो हमने क्या लिया? 6 ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर 3 आ गया. हमने पर 7 को पूरा डिवाइड नहीं करा. वी डिडंट डिवाइड द होल 7. हमने उसका एक पार्ट डिवाइड करा, दैट वाज 6.
तो हम क्या करेंगे, 7 को 6 को 7 में से माइनस कर देंगे। ये स्टेप यहाँ पे करा, 1 आया। 1 अब हम कैरी ले लेंगे 2 में, अगली डिजिट क्या है 2, तो एक कैरी दे देंगे, हमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जो 2 था यहाँ पे वो 12 बन जाएगा। फिर जब हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, और हमने वो यहाँ पे लिख दिया विच इज आंसर 36। अंडरस्टूड? अब समझ में आया? Yes. ओके। I'm doing one more question that is not of complete division. मतलब that is of complete division but not the two digit thing. Okay. Good evening, Ansel. Please switch on your camera and do the yes. Please do the bookwork of the topics that I've taught you, at least 2 pages of both the books. Okay. We'll take a question here that will be 35 divided by 5. So 3 is smaller than 5. So the answer will come in one digit only. 3 को हम नहीं ले सकते क्योंकि हम वो 5 से छोटा है. Okay. We cannot take 3 here because it is smaller than 5. So what we'll do, we'll take the help of our neighbor. Who is our neighbor right here? Our neighbor is 5. So we have taken 5 here, so it becomes 35. Not We took 35. the whole number. We took the whole number. Yes, we took the whole number because the first number was smaller than the divisor. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, 35 हमने ले लिया। 35 कहाँ पे आता है 5 की टेबल में? 7. वेरी गुड, 7 आंसर आ गया हमारा। अंडरस्टूड यहाँ तक? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन दैट विल बी ऑफ इनकम्प्लीट डिवीजन, जहाँ पे हमारे रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर सॉरी। ओके, 65 divided by 3। ठीक है, क्या 6 हमारे 3 के टेबल में आता है? पहले हम ये देखेंगे कितनी डिजिट्स में आंसर आएगा। 2 डिजिट्स में आंसर आएगा। ठीक है, चलो टेल मी 6 3 की टेबल में आता है? Yes, on 2. वेरी गुड, विल राइट 2 हियर। नाउ डज 5 कम ऑन 3 टेबल? No. So what number comes on 3's table smaller than 5? 3. What number? 3. On which number? On which number? 1. 1. 5 minus 3? 5 minus 3, 2. 2 is a remainder. Okay, wait. 2 is a remainder. How do we write remainder? We make a small slash here. I'll make it a very clear. 21 is our answer. Now we make a small slash here and we write 2. ठीक है? I will not go in points. Okay. With this question, we'll take another question to go in points. Let's take a similar question to this only. Same digit but different number, different divisor. चलो 6 5 2 की टेबल में आता है कौन से नंबर पे आता है? 3 पे। 5 2 की टेबल में आता नहीं है बट 4 आता है, 2 पे आता है। 5 minus 4 is 1। हम क्या करेंगे? अब देखो, हमारी ये पूरी डिजिट का हमने पूरा डिवाइड कर दिया है ना? बस हमारा 1 बचा। क्या करेंगे? हम एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। Why? Because we have divided the whole digit, but still something is left here, like 2 was left here, so something is left here. I want to divide it completely. What I will do, I will put a point here and then divide it. तब मैं 1 को तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकती ऑब्वियसली, क्योंकि 1 तो छोटा है 2 से। तो मैं क्या करूंगी, 1 के साथ एक 0 लगा दूंगी। ठीक है? Yeah, till we do it 0, we continue it. Very good. Yes, like we do it in math, same thing in Abacus, but a little different method. Okay. So 10 divided by 2 is
5, 5. 32.5 आ गया। अगर हमें सेम चीज यहाँ पे करनी होती तो हम कैसे करते? 21 आंसर आया था, 2 रिमाइंडर था, 2 का 0 ऐड करा, 20 आया, 20 नहीं आता 3 की टेबल में, 18 आता है, 6 पे आता है। ठीक है, फिर हम इसे अगर जब हम माइनस करते जाएंगे ना तो 6 ही आता जाएगा, इसलिए हम पूरा डिवाइड नहीं कर रही थी इसे, 6 ही आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर 20 ही बनता जाएगा। इसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे, इस लाइन का मतलब होता है कि ये कंटिन्यू होता जाएगा, 6 तो सिर्फ 2 पॉइंट लिखते हैं हम और फिर बार लगा देते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? टेल मी। Yes. Now write the steps of this, okay? Shri, you can leave the Okay. class. Please send me whatever you have done today in the class, okay? The picture of Yes. it. Yes. Okay. These are the notes. I'm offing my video, okay? Okay, notes. So, we're taking the question. Notes. I'm naming it as equation 1, okay? So, okay, so what is the first step here? To divide the first digit. So the step here is, first step, wait a minute. Divide the first digit of the dividend by the divisor. So in okay, Okay. so what is the first step here? Divide the first digit of the dividend by the divisor. Take carry if not divided completely. इसका मतलब क्या है कि अगर 6 पूरा डिवाइड नहीं होता 2 से तो हम उसका कैरी ले लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे पूरा डिवाइड होता है, वी डोंट नीड टू टेक एनी कैरी। ओके, मैंने इक्वेशन Okay. वाले से लिखा ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। नाउ सेकंड स्टेप, राइट इट नीटली। ओके, Okay.
So what I've written here, second step, divide the second digit of the dividend, which is 5, by the divisor, which is 2, with carry if it is there. हमारा carry नहीं था यहाँ पे, बट अगर कैरी होता, लेकिन 72 डिवाइडेड बाय 2 हमारा कैरी था, इसके अंदर नहीं है तो मैंने बिना कैरी कर दिया, पर अगर कैरी होता, if there was the carry, then we would have divided it with the carry, but there is no carry, that's why I've written it in bracket. Then what next I've written, if not divided completely, go into points by adding zeros. Okay, so I'm Okay. writing the third step, that is the additional step. Okay, understood? Yes. So here what I've written in the additional step, you divide the remainder left with the divisor after adding a 0 to it. So in equation 1, that was 65 divided by 2, we have done 32. We got the answer when we did the first two steps. Now when we have to add a point to it, this is the remainder. Okay, R is remainder 1, we have added a 0 to it, that becomes 10, then divided it by 2, which is 5, and then written it as the answer with in the point. Okay, not with in the point. Okay, understood? Okay. Okay, so this was all about your 2 digit divided by Could 1 you digit. wait a minute? I was writing. Yeah, just a minute, I'll show it to you. This was all about 2 digit divided by 1 digit. This same method is used in 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, any digit when you are dividing it by 1 digit. Okay, when you Okay. divide by 2 digit now, then the method becomes a little bit different. Okay, Okay. write it, make the arrows wherever I made them. Okay, Okay. when you have written it, tell me. Okay.